उसका समझ है Very good evening. Salam. Anybody yet to come? Those who were there on that day. Go. Just brief me up. Did we not finish that chapter? India? No. We'll finish it. We got one lecture or two lectures? Second also mine? Yes. What was the last topic that I just said? Boundaries we have finished. Yeah, after my lecture, how many do at least today coming back revise the notebooks? Good one. Pakka? Why? Smile and giggles are not going to help. Because 10th standard, I'm very strict. Every 10 minutes, whatever I've taught, they come and they write on the board. Why? Tell me why. Because they are facing board exam. You are not facing board exam? You faced. Do not make this clumsy habit, because SST is, I feel, wonderful subject. But kya ho jayega if you don't revise, na? Am I correct, Aishwarya? Yeah. Now only revising. So this day I'm just leaving it. Who spilled water there? Who? You guys is there? No problem. When you're walking and coming, careful, huh? Because the benches gaps are so narrow. If you are running in a Zoom and you are meeting at the corner, nobody to tell you. The notes part, did we give full 2 equal parts? Did I give any assignment? What is this? No date, headings. अच्छा, ये भी किया हमने. देखा how good he is. Parliament को भी earth के ऊपर उसने draw करके रखा है. So Indian Parliament is just at least he remembers it that I was doing it. Chal. Tell me from volume part, where did I stop till? Pencils are ready. We will be doing every chapter some maps also. Okay.
I did stop boundaries, then we have standard meridian हम लोग ने start नहीं किया. Am I correct? Yes. So let's start with standard meridian of India. There are two words which connects. One is standard meridian. Sometimes they will call it as prime meridian. First of all, what is this meridian all about, and why are we using this? Simple. That's all of this. Okay, what is standard or prime meridian in India? In India, do we have a standard meridian? No. What is the standard meridian all about? Do we have IST? Yes. What does it mean? Where do we get it from? India. No? But which part of India? Look into the volume. It is there. लोग ने को degree भी mark किया है. Right hand side में map है देखो. How much is our standard? What is the degree for that standard meridian? 82 degree 30 minutes to the east, west, east to the east. Correct. Let me tell you what was India before the British. Correct. Somebody told me it was a golden nightingale. Correct. Because India secure guy just manage with that. So if I try to draw a prime meridian, something like this. Now normally we have places both in Delhi and the other place that I visited, Barbar, Rajasthan. I had seen this place. What is this place all about? Not Gaurav, Jantar Mantar. In those days, the kings have constructed certain time dial. No clock. When the sun falls on it, how they calculate the time? We didn't hire any guide because guide minimum 500 रुपए से start हो रहा था. मैंने बोला ठीक है हम लोग सारा खाना पूसी कर लेंगे जो दूसरे को बोल रहा था और थोड़ा बहुत मुझे भी मालूम था स्टैंड ये प्राइम मेरिडियन सब क्या तो मेरा 2-3 दोस्त लोग नहीं वी विल हायर गाइड गाइड का अच्छा बात क्या है वो एक भी जगह नहीं छोड़ेगा पैसा लिया तो पूरा बहुत हॉट था and they were explaining how this dial system works how does that sunlight falls and then he will be showing कि कैसा उस टाइम का महाराजा ने टाइम फाइंड आउट किया. Is there any need today? Why? Normal, mobile, digital. अभी कौन सा चल रहा है? Smart. How smart it is we do not know. But it is a smart watch. So for primarily India was divided into 5 distinct. How many? Time zones. Is it 5 distinct time zones? Today also we are following? No. Why not? To create confusion. It will create a confusion. So 5 distinct कैसा रहा होगा? Any guess? North 1, correct? South 1 more, West 1 more, East, and the Central. Even today, India sees the first sunrise. Which part of India? Or again? Arunachal Pradesh. Every government office and even the school starts early morning sharp 7. The children has to be inside the school by 7. Can we imagine Mumbai kids? 7 में तो अपना बच्चा पेस्ट में ब्रश भी नहीं रहा 7:30 में उसको ऐसा लगता है कि ये क्या हाँ 7:30 okay and they close the government office and school sharp by 4. Why is it so? Early sunrise and early sunset. So if you travel from Arunachal Pradesh to Karan of Kutch, they say close to 2 hours 15 minutes का difference है time difference है. अभी नॉर्थ का तो पूछो मत एक्सट्रीम कारगिल से कन्याकुमारी तक ट्रैवल करने का बोलते हैं मोर देन 3 आवर्स का डिफरेंस है. इफ एट ऑल वी फॉलो द 5 डिस्टिंक्ट टाइम जोन व्हाट विल हैपन आई एम बुकिंग अ फ्लाइट जम्मू कश्मीर 12:30 फिर मैं चेक करेगा कन्याकुमारी कब लैंड होगा. अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अरुणाचल प्रदेश आई हैव टू गेट अप एट 4 o'clock कैच द फ्लाइट बाय 5 o'clock. उस टाइम पर मुंबई में क्या टाइम होता रहेगा? फिर मुंबई में उतरेगा तो 2 घंटा आगे रहेगा. I don't understand what I'm saying. So for this,
Britishers removed all this, they followed only one. For that, they need one line which divides the Earth, India into two equal halves. You know that noon, what time the sun is exactly overhead? What time? 12. Every day. Generally every day. If it is winter, it will not be 12. So they say from 12, they try to divide one line. That is nothing but standard meridian. It passes through a place in UP called, it's called Prayagraj. And it tries to divide the, India into two equal. So that's why the standard meridian is very, very important. Absolutely clear. Shall we go ahead? Okay. Last boy, you read. Be a bit louder and clearer so that India lies to the east of prime meridian between 68 degrees 7 minutes to 97 degree 25 minutes east longitude. To follow our timing, India has accepted 82 degree 20 minutes east longitude as the standard meridian of India. The local time underline that as the standard meridian of India. The local time at this meridian has been accepted as the Indian Standard Time from India. Such a thing that has been derived of its own. It has avoided a lot of confusion which would have been created due to the following of different local times. It has got harmony in time throughout the. Underline the word harmony in time. Pronounce that word harmony. Come on, everyone. What is harmony? It's okay. Feel free to tell. I'm not going to scold you. What is harmony in time? You are reporting to your mother that Alagesh is going to leave a 7 in the class, but that time it will be 8 in your place. By the time I reach my house, it will be 9 in your place. By the time I WhatsApp, it will be 11. बोलेगा तो कौन सा time तो class से निकल रहा? Instead, you say I leave by 6 o'clock and I text you by 6:30. Will you also understand if he is not in Maharashtra or if he is living in somewhere in Meghalaya? Where's Meghalaya? Somebody told me, sir, it is a foreign state, not Indian state. पक्का? Foreign state नहीं है? अरे कल ही मैं गया था, passport पूछा लोगों ने. I traveled to Andaman, our own UT. वो भी वो टीचर का नाम नहीं बोलने का, अभी भी काम करता है हमारे साथ. सर फिर इंडिया का करेंसी तो चला, चुपचाप था. फिर आप पासपोर्ट लेके गए ना, तो फिर भी चुपचाप था. सर बोलो ना सर, क्या फॉरेन कंट्री का और हमको बताया. मैंने बोला कौन गधे ने आपको बोला कि सर कोई बोला नहीं, मेरा जनरल नॉलेज है. सर आप जाना, बिना पासपोर्ट का जा सकता है, बिना ही रूल्स का. कैसे सर, मैंने तो सुना वो अलाउ नहीं करेंगे. वो इंडिया का ही टेरिटरी है. अच्छा रुको एक बार मैं चेक करता हूँ, मुझे किसी ने बोला पासपोर्ट कैसे. नहीं, it happens, confusion ना. Till now, many people from Assam, many people from Meghalaya, they come to Mumbai and they look more like not Indian type. And थोड़ा उनका appearance थोड़ा different है. तो तुरंत अमर बच्चा, मम्मी, there is a Chinese man in our country. और मम्मी, हाँ बेटा, Chinese आया. अभी बेटा ना बोला तो मम्मी को थोड़ा रेफर तो करने का. हाँ बेटा Chinese है. क्या मेरा बेटा का नॉलेज है? मतलब क्या नॉलेज है? वो मेघालय पर्सन को देख के बोल दो. छोड़ो ना सर, वो दिखता ही वैसे ही है. What's so IST will reduce that and will bring in harmony. अब I don't know how you show your gratitude and warmth to your teachers. कभी देखा है? Oh, this is my teacher. I love my teacher. ये शायद ये ऐसे लिखने बोला टीचर के ऊपर. पुराने जमाने के बच्चे. My favorite teacher. She teaches me discipline. Without her, my life is. अभी का बच्चा लिखेगा कैसा? I don't want to see the face of the teacher. And I pray to the God Almighty, कल ही उसको यहाँ से उतर दे. Teacher को दे भी रहा. Teacher, I have written a wonderful lesson. Please read it loudly in front of the class. तो मैम भी बेचारा एकदम ignorant होके पढ़ रही है और ऐसा उसके बारे में लिखा है. फिर मैम बोला, who gave you? मैडम, it is your inspiration, मैडम. और उल्टा उसी के पर डाल. Good essay. और ऊपर से पूछ रहा, how much marks you will give? 0. Why, ma'am? Did I not write properly? बच्चा फिर भी ignorant है. No, you have written bad things about me. Madam, और एक बार chance दो, और लिखेगा. No, I don't want to. Next time लिखने का अगर chance देगा तो last time I wrote an essay, she did not like it. I am going to write once again. वो भी लिख दिया बच्चा.
So will there be a harmony between the teacher and the student? तो मैं तो बोलता हूँ जब तक 10th पास में आपका स्कूल टीचर पूरा आपका फ्रेंड्स है फ्रेंड्स है तो आप लोग उनके साथ फ्रेंड है हाँ ऐसे थोड़ा सा निकल रहा चलो लेट्स प्रोसीड सो अंडरलाइन दैट वर्ड हार्मनी उधर ऊपर लिखना यूनिफिकेशन ऑफ टाइम today you guys have got economics as well we'll start with Pallab chalo The latitudinal extent influences the duration of the day and night. Underline duration of day and night. As one moves from south to north, from Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. Underline that. This is what I was saying. And in the exam, they'll ask you, how much is that time lag? What is the other word for lag? Difference. Huh? I didn't get it. Delay. हाँ, time difference. So, the लिखना 2 hours का difference है. So now, अच्छा हम लोग गुजरात में हैं. If now we are in Gujarat and it is 4:30 now, what will be the time in Arunachal Pradesh? 6:30. Pakka, confirm. They are ahead of Gujarat by 2 hours. Go ahead. Indian. Go ahead. The Indian landmass has a central location between East and West Asia. Underline only the word central. India is the southward extension of the Asian continent. Only underline southward. The Trans-Indian Ocean routes, which connects the countries of Europe in the west and the countries of East Asia, provide a strategic central location. Underline that word, strategic central. If I ask you the meaning, exact meaning of the word strategic. Land. You speak like this. Right? Military, defense, strategic. That's very important. Go ahead. Deccan Peninsula extend into the Indian Ocean. Thus help India to establish close contact with West Asia. This makes possible contact with countries in Africa and Europe from the western coast and with the Southeast and South Asia from the eastern coast. Underline only western and eastern coast. Now imagine if Himalayas were pushed deep to south. It won't be. What will happen? India will be an isolated place. You like isolated places? Don't like. Why not? So you want always find the network following you. It's like there are so many places I have traveled. Forget about the 5G, 4G. There is no mobile network at all. And I think that's the most happiest place of Gujarat. Why so? Why sir? Paul, sir, आपका lecture है सर. सर आप किधर है? सर वो पेपर सेट नहीं हुआ. रखा भी दूँ. मैं कॉलेज से बात. हाँ तो सर एक 5 मिनट बात कर लें. अभी तो ठीक है, roaming नहीं है. I remember earlier it was roaming charges. And that time I was not working with UK, I was working in some commerce colleges. And the people purposely phone करें. सर आप ऑफिस से बाहर है? बोला हाँ. सर मुझे आपसे बहुत बात करनी है. तो रोमिंग चार्जेस लग रहा है, तो आपको लग रहा है ना, मुझे तो सही है. तो one time I followed, 2 time followed. Next time I got a new SIM card, the state where I am traveling. जैसे महाराष्ट्र से बाहर जाएगा वो SIM card निकाल लेगा, वो लोकल SIM. तो next प्लान को सर आप कांटेक्ट कर रहा था, बोले क्यों? सर वो एक डाउट आ गया था, मतलब तेरा डाउट के वजह से मैंने चीज क्या सर वो नंबर देखे था, बोले क्यों? They are very happy. उसका पैसा कट रहा है और मेरा नहीं. करेक्ट? पहले आउटगोइंग तो इनकमिंग में भी कट जाता है. एंड आई यूज्ड टू कीप ऑन सेइंग मम्मी जरा रखो फोन जल्दी. नहीं रुको बेटा अभी मुझे रेसिपी देने का है. मम्मी मेरा पैसा कट. ठीक है पहले सुन ले मैं क्या बोलती हूँ. वो बाजू वाला कुत्ता को बीमार है. ना बाजू वाला कुत्ता बीमार है तो मुझे क्या इन्फॉर्म है. नहीं इज मिसिंग यू वेरी बैड. एंड दैट आल्सो नॉट रोलिंग कॉल. अभी इंटरनेशनल कॉलिंग है. उधर भी यही फालतू सिस्टम चलता है. अभी इंटरनेशनल आई थिंक आई वाज वर्किंग देयर वी हैव अ फोन वॉइस ऑपरेटेड इंटरनेशनल फोन सिस्टम. लैंडलाइन कनेक्शन रहेगा यू हैव टू पे आई थिंक $59 and you can call to Asia unlimited. ग्लोबल कॉलिंग लगेगा. देन वो वॉइस का जो फैसिलिटी है वो एशियन से कनेक्ट है उधर यूरोप में और इंडियन से ज्यादा कनेक्ट है. क्यों? सो वी कांट कीप आवर माउथ शट.
मुझे से टेलीफोन उठा है अभी आई एम बिटवीन द लेक्चर्स आप कौन है क्या आउटसाइड द लेक्चर हाँ 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 अरे ना तो बोलो अच्छा हमें नहीं हाँ 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 क्या देखो मम्मी का So I think that's why India is said to be the #1 mobile user in the world. You know that? अगर iPhone का भी आउटलेट ओपन हो गया है, अभी नहीं कोई विजिट तो ना पहले मलट था, विजिट तो किसी ना किसी, तो सीधे ऐसा बताया तुमने, अरे वाह ये ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सही क्या है, अंदर कैसा है, ऐसे भी, तो ऐसे भी चलना, सेल्स चलना, या डेंस है, डेंस है तो मैंने At that time, when it was OPs, they were playing some local Marathi song. And Tim Hawk, he came from America to open the shop. He was dancing in a Marathi song. So the Americans have a local Marathi song in Africa. And why they are doing so? Because they know that Maharashtra में अगर mobile phone बेचने का आगे जाके लोग ये भी बोलेगा वड़ा पाव free. जो चीज़ें जितना तो एक वड़ा पाव 25 रुपए का वो फोन 80,000 बोलेगा सर वड़ा पाव फ्री अरे 80,000 का फोन ले रहा है अच्छा वड़ा पाव फ्री नहीं like yesterday I went to consider to my mother was at 7-Eleven you know see and this is I know lata लोग भी busy रहता है मैं बोला लड़कियां मतलब लोग मुझे कुछ and मैंने मेरा मम्मी को बोला तो वड़ा पाव कैसे नहीं वड़ा पाव 7-Eleven का वड़ा पाव कुछ अलग सा है but the good thing is 15 rupees if you have tried it it's good you like and that's what the youth people are tapped by these foreigners अगर मुझे इधर पर कुछ नया आउटलेट आया तुरंत और क्या है वो भी बता रहे मतलब कुछ नया स्कूल में नया सिलेबस वाह नहीं कुछ नया दिख रहा है अरे सर नटा डेट आईसीसी स्टूडेंट से सर आप क्या उनको एसएससी के टीचर ने नहीं दादा तो सर नया टीचर आना अरे आज फ्री लोगों ने नया आउटलेट खुला है किधर खुला है सर सीट्स के पीछे आगे सर अभी आपको फाइंड आउट करके बता लोगों ने नीचे लाइव लोकेशन भी सेंड कर दी स्कूल का वो लोकेशन बंद है They need to connect you. I have to tell you, these things are very important in your life. What is that network? And unless you do not do networking, you have 9 students who are there. Networking का मतलब क्या है? If she is good in math exam, and you are not so good, तो यहाँ में से बोलता and she is good in SSC, so networking करेंगे. Not during the exam. अरे तो रिक्वायरमेंट करो सर और ज्यादा सीखा है साइंस की तरह कॉम्प्लेक्स अच्छे से होते because when you are learning from your own age group you learn it fast and she will also अरे यार ये सुनो इंडिया साइंस लोकेशन कितना जो सुनो सकते नहीं then she अरे उसका छोड़ मुझे मालूम है लोकेशन क्या है जितना मैं नहीं सिखा रहा ना उतना आप सीख ले इसको फिर हमारा क्लास में रखा है ग्रुप स्टडी ग्रुप आता है बैठता भी है स्टडी नहीं करता आप आया तो मैं ऐसे चीज का फ्रेंड है तो जब भी मुझे दिखेगा इधर उधर देख के ऐसा चला तो क्या करें उसे ग्रुप स्टडी करना है मतलब ग्रुप के साथ स्टडी में आसान करना होगा so we have to tell very simple wherever you are there you have to establish a proper product go ahead no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has heritage. इसको ब्रैकेट में डाल दो no other country से लेके इंडिया and why if any question comes why Indian Ocean is referred as Indian Ocean इंडिया का coastline का लेंथ कितना है देखो तब दिया है 7,000 land boundaries हम 7,516.5 something मुझे याद है how is our land boundary 15,000 very good if anybody asks you why Indian Ocean is referred as Indian Ocean तुरंत लड़के के नीचे लिखा मेरा भारत महान और नीचे जय हिंद भी लिखा है तो ये कैसा मोदी जी बोलते हैं आज हमारे सबको मैंने बेटा इसका
आंसर नहीं सर मोदी जी को बोलूंगा मतलब बेटा इसका क्वेश्चन वो बात की बात है वो तो जाएंगे तो निकलो 1 मार्क्स तो यू हैव टू राइट कोस्टलाइन इज द लेंथीएस्ट बाकी कंट्रीज का उतना बड़ा नहीं ठीक है गो अहेड It is India's eminent position in the Indian Ocean. अंडरलाइन दैट आल्सो एमिनेंट आई थिंक ये सोसाइटी मेंबर्स आप में है कुछ लोग जो अपने आप को हमेशा ज्यादा दिखाता है मेरे सोसाइटी में भी है पहले तो चेयरमैन का नाटक कुछ अलग ही रहेगा है ना सेक्रेटरी को लगता है कि वही है बिल्डिंग और कोई नहीं है और कौन है फिर और कौन है पोस्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले वो बेचारा गरीब की तरह रहते हैं बट ये चेयरमैन और सेक्रेटरी का नाटक रहता है उसका कुत्ता से लेके सॉरी उसका डॉग से लेके उसका कार तक वॉचमैन धोने का दैट आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट अभी आज मेरा वॉचमैन को आज रात को जाके मैं एक डोज देने का वो मुझे ऐसा समझता है कि ये क्या सुबह जाता है रात को आता है इनफैक्ट 2 years आई हैव रन माय ओन सोसाइटी वो तभी नहीं था तभी एक नेपाली रहता था हमारे बिल्डिंग में चेयरमैन सिक्योरिटी एंड उसको मैं इतना सताया ही विल बी कीप ऑन बॉलिंग मी व्हेन तभी लोग ज्यादा नहीं आए व्हाट डज इट मीन यू आर इनटू अ एमिनेंट पोजीशन व्हाट इज एमिनेंट आप लोग खेलते रहेगा सडनली वो अंकल आएगा चुपचाप नहीं जाएगा इधर नहीं खेलने का ऐसा बोला है तो तुरंत बोला हाँ अंकल हाँ अंकल हाँ मतलब वो अपना पोजीशन दिखा रहा है हाँ और बोलो मुझे नहीं मालूम मुझे एक मेंबर ने ऐसे ही आके बोला इधर क्रिकेट नहीं खेलने का मैंने बोला हाँ ठीक है नेक्स्ट टाइम इधर बिल्कुल नहीं खेलना हाँ ठीक है आप खेलेगा मैं घर का ओनर को कंप्लेन करेगा मतलब मेरा घर का ओनर तो ही वाज नॉट नोइंग दैट आई एम द ओनर ऑफ द हाउस शॉर्ट्स पहना था और नेपाली बॉलिंग कर रहा था और कंटिन्यूअसली आगे सिखाएंगे तो उसको लगा नेक्स्ट टाइम मैं घर का ओनर को मैंने हाँ कर लो पर 2 मिनट गया अंकल इधर आप क्या है वो घर का ओनर नहीं है कम नहीं ओनर अच्छा ठीक है बाद में बाहर जाके खेल His name is Mr. Sheila. Still he is there in our society. अभी भी देखता है हाँ अंकल ओनर कैसा है छोड़ना है मुझे तो मैंने ऐसे बोल दिया तो एमिनेंट मतलब although you are not noticing me फिर मैं बुला के बोलेगा मैं सोसाइटी का चेयरमैन तुरंत बच्चा बोलता क्या तेरा सर पे क्या ये लगा है क्या नहीं मेरा बात सुनना पड़ेगा तेरा वाइफ से तो तू बात कर रहा है व्हाट इज एमिनेंट मतलब he wants to show off अभी जैसे we are going to have summits in India G20 तो चालू ही है you understand G20 ना you understand what is G20 most powerful 20 countries of the world every year हर एक कंट्री में होता है और इस ईयर इंडिया के पास है and there is one more summit which is going to come to Goa the summit is known as SCO ये तो सुना है Shanghai Cooperation Organization G20 के लिए मोदी यहाँ से पाकिस्तान को दिल जलाने के लिए इनवाइट करते हैं आ जाओ पाकिस्तान बोलते नहीं हमारा कचरा नहीं करने का बट एससीओ के लिए वो आने के लिए तैयार हो गया इट इज इन गोवा एनी आइडिया व्हाई एससीओ आके उनका मुंह बोला डैडी का कमिटी है चाइना का कमिटी है तो चाइना ने बोला चुपचाप अपना जूता उता पहन के इधर आ जा फटे पुराने मत आ एंड देयर इज वन बिलावल भुट्टो इज द सन ऑफ दैट बेनजीर भुट्टो अभी आ रहा है गोवा के लिए मुझे तो लगता है आते समय he is a very stylish fellow young man एक कटोरा भी साथ में लाएगा एंड मोदी के बारे में सब बोलते सर जी अरे साइड में रख सर एक 10 बिलियन बस इतना ही और कुछ नहीं है और अगर मोदी ने आंख मार दिया जय भारत इंडिया महान बस तू मेरी मां why I'm saying this is what India is having the position in our country Dalai Lama have you heard of is the Buddhist leader monk is 90 plus China अभी भी वो बुद्धिस्ट लीडर को मानता नहीं है बट इंडिया ने 2 दिन पहले दिल्ली में बुद्धिज्म का बड़ा सेमिनार बुलाया एंड दलाई लामा को भी इनवाइट किया एंड दलाई लामा could openly talk against China staying in India अगर वो इंडिया के बाहर होके अगर कुछ बोलता तो तुरंत फिर कौन सा फ्लाइट से उसको उड़ा के लेके जाता चाइना पता नहीं what does it mean India is showing its prominent Russia and Ukraine are fighting India is neither discriminating Russia nor discriminating but Mr. Joe Biden wants India to interfere into it do you think एक 15 साल पहले कभी किसी ने पूछा
एंड जो बाइडेन भी मोदी को इनवाइट करने के लिए उधर आ ऑस्ट्रेलिया में आया एंड दे माइट साइन द पीस ट्रीटी विद रशिया एंड यूके. सो हु इज शोइंग द प्रोमिनेंस? इंडिया. तो आप अगर आप मेंटली नहीं, फिजिकली नहीं, आप अगर आपका नॉलेज वाइज काफी बड़ा है, आपका रिस्पेक्ट तो फैमिली में ऐसे ही बन जाए. तो कौन सा एक ऐड है? मान्यवर ना, मान्यवर. अरे एक ड्रेस का ऐड आता ना विराट कोहली, मान्यवर. इज इट मान्यवर? आई हर्ड दे आर वेरी कॉस्टली बोथ फॉर गर्ल्स एंड द बॉयज. मान्यवर नहीं देखा? शादी पे चलना है, तैयार होकर चल. मुझे तो लगता है तैयार होकर मतलब 2 दिन से उसने खाना नहीं करा. तो मैं देखता हूँ especially for the ads in which they give you proper slogans. IPL में एक ऐड दे दे के इतना रैपिडो देखा, बाइक वाली टैक्सी. पहले एक लेडी आती थी, वो ऐड अभी चिपक गया. अभी ये दूसरा एक जेंट्स आ, भाई साहब लाइन में उनको, हम लाइन में नहीं रुकते, तुरंत देख लो बाइक आता है, बाइक वाली टैक्सी. तो look how beautiful is that. मतलब ये कैची है. So in fact when I teach BMM students, they have a paper called mass media. तो वो पूरा पेपर में हमको ऐड के बारे में सिखाएंगे. तो मैं पुराना लाल दंतमंजन ऐड से इट इज करेक्ट. वो निर्मा का ऐड पहला, अभी का ऐड, लिरिल का एक ऐड रहता था जिसमें लड़की बड़ा वाटरफॉल में, और कुछ लोग ने बोला वो लड़की वाटरफॉल में चल गई. इतना ही सीरियसली सीधा. एंड देन देयर वाज अ वोडाफोन का ऐड एक पग डॉग के साथ आता है, अगर आपको याद है. तो वर्ल्ड WWF ने टेस्ट कर दिया. ये WWF ने दूसरा वर्ल्ड वाइड फंड. लोगों ने बोला एक कुत्ता को कितना दूर पकड़ा है? आई डोंट नो, ओनली 5 किलोमीटर पकड़ा है. Because that pug dog is unable to breathe. If you have anybody, इसने देखा है डॉग को, एक तो उसका नाक ऐसा रहता है ना, and it cannot run for long distance. तो किसी एनिमल केयर में टेस्ट कर दिया ऐड वाले के ऊपर. तो बेचारा अभी उसको लगता है कि इंडिया में कोई जंगली कुत्ता पकड़ेगा, बट कोई फॉलो करेगा वोडाफोन के जगह वो कुत्ता आएगा तो सर ये तो गली का कुत्ता है सर, मत खरीदो वोडाफोन मत खरीदो. Why I'm saying for every ad there is a reason behind it, how they reach it. एक लास्ट बोल देता हूँ, फेविक्विक का एक बहुत पहला ऐड आता था, अगर अभी टीवी में रहेगा तो मैं दिखाता हूँ, नेक्स्ट सेक्शन में दिखा. एक बंदा बाहर बैठ के बहुत देर से फिशिंग हुक डाला रहेगा और दूसरा बंदा खड़ा होकर, यू हैवंट सीन ना, दैट्स अ वेरी पॉपुलर अवार्ड विनिंग है. आपको वैसे भी इंडिया का वो वीडियो भी दिखाना है फिजिकल फीचर्स. What did I say? हाँ, हाँ YouTube में मिलेगा, इसमें क्या है? ये देखो, मैं बोलने सच आप लोगों को बहुत मजा आएगा. और ये हाँ, दिस इज द वन. He's an actor now. That's it. Now, why did I show you the ad? Because it shows you how prominent is this very quick. Even fish को भी चिपका के उठा के लेकर आए. Correct? So, let's go. So, I'll take on the various passes across the mountain. Are you reading there? It's 726. That's okay, na? The various passes across the mountains to the north have provided passages, underline the word passages, to ancient travelers, while the oceans restricted such interaction. Underline oceans. What is restriction? Upalikhna, stop. The ideas of Upanishads and Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numericals and the decimal systems, thus could reach many parts of the world. Today we are very proud of our Ramayana. We are very proud of our Upanishads, very proud of our Arjuna and
Who? Your God, Hare Krishna. And what is that? It is called as Bhagavad. Whoever has read the Bhagavad has understood it is not a religious scripture at all. Anybody can learn. In fact, ISKCON temple, they have close to more than 2,000 temples around the world. And they have made all the Europeans who are only non-veg people, pure vegetarian ban gaya, jo bhi ISKCON mein ghusa hai. In one day, minimum, they distribute not more than 5 billion plates of prasadam all over the world. उसका एक वीडियो भी है, मैं बाद में दिखाता हूँ कि इतना पैसा इनके पास आता कहाँ से, and they are very good at it. अभी मेरा M.Com का स्टूडेंट ने लेके गया मुझे ISKCON जुम्मू. She told me, sir, आप इसको फॉलो करेंगे? मैंने बोला बिल्कुल. The day one till day, whether in India, whether I'm abroad, उस कंट्री में ISKCON रहेगा तो मैं जाता ही जाता. It's just the lavishness of the temple. कभी आप खारगर जाना, वो makeshift temple भी आपको ऐसा लगेगा it's a very huge temple. अभी तो real temple बन रहा है. खारगर गया नहीं है? वो बड़ा golf club है ना, वो तो देखा रहेगा. उसके आगे Central Park है. बस कभी जाना एक बार फैमिली के साथ. You will इसका temple का. I had certain into people who came from all the way from Toronto. एक पंडित जी तो टोरंटो से. I told him the place where I was working. He was so happy. फिर इधर क्या कर रहा है? मैं बोला बस आपसे मिलने आया. And he was so happy. Every Sunday they conduct pujas, kirtanas, and it is awesome. देखा, मैं religion को promote नहीं कर रहा हूँ, but you go to Upanishad, you know Panchatantra stories. You know what are Panchatantra stories? This gives you morality, the moral part of your life. Let's go ahead. The spices, muslin. What is muslin? The cloth. Huh? And other merchandise were taken from India, underline, to different countries. On other hand, influence of Greek, underline, Greek culture and architectural styles of dome and minarets. What are dome and minarets? Temple. हाँ, dome actually Taj Mahal का देखा वो dome है, और minaret तो चार स्तंभ. वो ग्रीक में इंडिया से ही गया है उसमें. From West Asia can be seen different. India and our neighbors. She'll take it. What's it? Come on, go. Start. India and our neighbors. Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, and Maldives are the adjacent neighboring countries of India. To its east. वो adjacent के नीचे उधर लिख देना immediate neighbors और close neighbors लिखना. So underline east, underline Bangladesh. ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में. Bangladesh is bounded by. Please circle the state name. West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. देखो, Bangladesh is not India, but how many states are bordering that country? Come on, everyone. West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. Once again, including Aishwarya also. ये क्वेश्चन है. Go ahead. To the south are Sri Lanka and Indian Ocean, while on the west are Pakistan and the Arabian Sea. Underline east, sorry, south, underline Sri Lanka, underline west, Pakistan. Did I say India and Sri Lanka are separated by Pak Strait? Go ahead. India has common frontiers with Pakistan, Afghanistan, China, Kyrgyz, Nepal, Bangladesh, and Myanmar. देखो, how beautiful is our volume. China लिखा है और बीच में लोग ना ब्रैकेट में टिबेट डालते हैं. Will China accept this? क्यों? China क्या बोलता है? टिबेट डाल के उधर China डालता है. In fact, Tibet is not out China. वो लोग उसको ईस्ट चाइना बोलते हैं. अभी इंडिया का भी पहला पड़ाव है पीओके को इंडिया के हाथ में लेना. You know what is POK? Everybody? This is POK. Pakistan occupied Kashmir. ये इंडिया के पास नहीं है. And this part is also not with India. ये अभी चाइना के पास है. And I can tell you I can show you the speech of Amit Shah. वो बोलता है हम जान दे देंगे, but POK को अपने हाथ में ले. और ये पार्ट क्या है? Anybody? Siachen. और ये one of the best glacier है, but ये भी चाइना के पास ही है. पाकिस्तान से POK लेना कोई बड़ा बात नहीं है, और इनफैक्ट वो अपने आप आ जाएगा, बट सियाचिन लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इंडिया विल डू इट. वी हैव अ मैप
today I won't be show you. I'll show you next time. Just remember me. We call it as Akhanda Bharat. ये सुना है? What is Akhanda Bharat? Anybody? ये बीजेपी अभी promote कर रहा है. इंडिया का जो ये साइड का मैप है ना, it is not only Pakistan, Afghanistan. We can go up till Israel. That is our mind, India. But अभी, I think, sir, फिर इंडिया का मैप हाँ बड़ा हो जाएगा. One international reporter asked Mr. Amit Shah, sir, how are you saying Akhand Bharat is India? Different language, different religion, है ना? And different people. How will you control that? So he raised a very simple point. In India, we have so many states with different language, है ना? They don't follow our religion at all. Are we not one? Oh, बेचारा reporter मुंह बंद कर. हमारा Shiv temple is found deep in Saudi Arabia. In Russia, we have coins of Ashoka the Great. ये सब कैसे गया? We had good contacts there. You go to America, even today there is a community called Red Indian. You know them? Their main god is Lord Shiva. एनाकोंडा करके एक पार्ट 1 है, एनाकोंडा पार्ट 2 नहीं है. पार्ट 1 में देखो पहला वो अमेज़न को ही दिखाएंगे और ये रेड इंडियंस को दिखाएंगे. एंड इवन टुडे दे आर अमेरिकन्स. इनफैक्ट वो पीपल ही ओरिजिनल अमेरिकन्स है. अभी ये सब अमेरिकन्स है, ये सब तड़ीपार पीपल है, सब गुंडे लोग को उठा के जो फेंका वो अमेरिका में फेंकता था. अमेरिका वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश ओनली. So this is what our country all about. And there is a big temple in Indonesia. I can show you that video. मुझे next lecture में याद दिलाना. That temple is built by Raja Raja Chola. But वो Indonesia में. Can we go and fight with Indonesia? Oh, temple हमारा हमको दे दो. नहीं दे सकते. But that country celebrates that temple, takes care of the temple because Indonesia आपको मालूम नहीं है world का largest Muslim population. But even today, any Hindu festival, it is a national holiday, and all the Muslims participate in the festival. This is what the secularism. Are you understanding? So it is all Indian values gone to that countries. Some have remembered, some have forgotten. India is responsible for the defense of Bhutan. A small Underline defense of Bhutan. Bhutan is a very small state. ये भी हिमालयन स्टेट ही है. इंडिया नहीं है और भूटान के पास अपना आर्मी नहीं है. फिर बाजू में चाइना हॉक के तरह मुंह खोल के बैठा है. एंड इंडियन आर्मी ओनली डिफेंस भूटान. इनफैक्ट इंडियन आर्मी में एक डिवीजन है. आई डोंट नो वेदर यू नो दैट डिवीजन. वी कॉल देम एज ITBP. एनी आइडिया फुल फॉर्म? नेक्स्ट लेक्चर यू विल टेल मी. ओके, चलो गो अहेड. Park Strait separates India from Underline, very important. It is silent Park Strait. Maldives lies in the south of Lakshadweep Islands. Underline Maldives. Have you heard of this Maldives? Yes. It is really bad, Maldives. It's one of the tourist destinations, especially Amitabh Bachchan का hot favorite. ना हमारा बच्चा लेकर सर अगर वो लेके जाएगा मेरा भी hot. To be very frank, it is not very costly like India. It's cheap and it is very good. Entire island, if you go to certain resorts, the water is up to your knee level, ankle level, and amazingly good. And there are certain countries, India ka, I can tell you exactly, 19,333 rupees is equivalent to 1 crore. So अगर आप इंडिया का 20,000 लेके गए तो उधर का 5-star होटल में रुक. सच्ची इंडिया का करेंसी वैल्यू उधर उतना ज्यादा है. एंड इफ यू टेक 1 लाख आप तो उधर का आते हो. फिर हम लोग तुरंत जरा उस कंट्री में जाकर जरा हमारा वैल्यू बहुत ठीक है ना? व्हाट डज इट मीन? अमेरिकन डॉलर. बट इंडिया इज अहेड ऑफ सो मेनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. The length of the common land border with our neighboring countries is about 15,200 km. Underline common land boundary है 50,200. Note: since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 km. Underline the word Suez Canal. Have you heard this canal? It's a very historic canal. पूरा एशिया और यूरोप का बीच का ट्रेड यही कैनाल से होता है. And which other country really passes through? Egypt.
types of states in India. The provinces and the territories. Underline provinces. Provinces were ruled directly by the British officials who were appointed by the vice. Princely states were ruled by local hereditary rulers who acknowledged sovereignty in the return for local economy. Sovereignty का मतलब क्या है? मतलब लिखना full control. Okay. Now you are going to do small assignment for me. Right now, take your map work, same chapter. Practice map is given. Yes. Page number 145. You do the same work in 146 in your own. Use your pencil. Prime meridian and Tropic of Cancer. Did I not say both are intersecting? At a UP, Prayagraj, Allahabad. Actually, नीचे आ गया. एक मतलब state है by the way. UP उसके ऊपर है. Come on, do this map in 146. Meantime, we will get ready with economics. Okay, this is my third lecture in your class or fourth lecture. Only second lecture. That day I took 2 classes there. Then only 1. And उसके बाद आज there was no in between lectures. Sure. मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैं आपको 3 महीने से जानता हूँ? नहीं जानता है? Use a scale properly, mark the exact, don't mark any in between lines. Meantime, I'll find whether we have any video of this chapter. Hindi language it's okay, or you want English only? It's a very small video. Draw that. We'll see this, and then we'll get into English. No pens are allowed. Only pencil. But how could I remember I took 2 lectures of yours on that day? Are you sure? And the last Monday was my first lecture. Yes. And then only 1. And second lecture was taken by whom? Yes. What is the thing? You don't have anything? Then where is it? Geography lecture में ऐसा शेयरिंग टेयरिंग हो रहा है, तो ज्योमेट्री क्लास में क्या होगा? एक डी है और 15 स्टूडेंट को सर्कल बनाना,
कैसा बनाएगा? तुरंत लड़की से बैग लेके बना सेंटर मार्क करने के लिए क्या करेंगे? Right, what is primary mean? How do I know? Tropic of Cancer. And there's one more map also, which I'll teach you. Wait. Okay, side by side, shall I play the video of your chapter, the chapter that you have done? Will here do the simultaneous work. Keep doing. Done it? ये देखते चले जाते अंदर. Tropic of Cancer के दिले. I'll stop it. I know in TV certain vehicles for everyone is there. वो BKC में कौन सा बिल्डिंग है आपके घर? हरे कृष्ण का भक्तों के साथ में मिलता है. I should visit. उतना टाइम नहीं तो लगेगा यहाँ पे visit जाओ. Purchase करना पड़ेगा. She's forcing me to buy a phone which is 1.5 lakh. उसका भी कैसे चेक करूँ मेरे घर पे एक ही चीज बोलेगा I like the phone but I don't like the apps. Let's say this is the best app. It's okay but today my horoscope is bad. I should not buy any electronic thing. So today is the best day. Sankashti है और अक्षय तृतीया भी है. But today there's a problem with 200. They force me not to think. So is the map is wrong or it doesn't help? That's okay, but we try to catch this point. That is the center of India. Shall we? Now look at the second map. You do it as an assignment. Now look at this map. This is what you will be learning from page number. Come back. It's on page number 137. Did you see? We have states right from AP. And we go up till state. Last state is what? The next page. It's Telangana. You have to remember at least few state and its capital. So just pick the states which generally you must remember. One, you pick West Bengal. Then you pick Maharashtra. No doubt. Everybody knows. Then you pick Karnataka. What's the new name of Bangalore? Please write there only. Bangalore. L-U-R-U. L had no O-R-U factor. L-U-R-U. Tamil Nadu, Chennai. Correct. And pick MP. In exam, they will bounce you by checking these states. Pick Mizoram, Nagaland. Did I say Meghalaya? Did you see? Meghalaya. Meghalaya with Cherrapunji. Cherrapunji, I'm so sorry. It is Mausigram, but capital is Shillong. Then come down to Jharkhand. What's Jharkhand popular for? MSc आता है जो उसमें नहीं आता. It is popular for the largest iron deposits in India. ये बच्चे बोलता तो नहीं है, एग्जाम में लिखा है. मैंने किसी को नहीं. And it is correct also. He is from Ranchi. And Himachal pick कर लो. Again UP. And then again Kerala. There are two Raipurs. One Raipur is in Chhattisgarh. That is the capital. Then come down to Gujarat. No doubt BJP remains in power. We will never forget Gujarat. Okay.
Haryana and Punjab. Now, who can tell me why Haryana and Punjab are having same capital? Regular condition, short of money. Very good. Chandigarh is a union territory. Very good. UP. It shares the capital with the state called Haryana. Retrograde picture. But in the map, you come down to the map. ये ऐसे ही लिखना है, mark करना है, and try to mark the capital using your search, using your atlas. If you are unable to do so, you have to tell me next time we will do it physically with you. Are you understanding? All the states you have to mark with their capital. एक last to last year मुझे एक लड़का याद है, हर जगह middle में रखा था capital. मुंबई को वाइस में महाराष्ट्र का रिजर्व मार्क करके रखा इधर. बोले सर वो capital है ना, हर जगह बीच में. Mumbai comes somewhere here, you know that. So you have to check your atlas. So this is the assignment. So please write it in your page number 148. By next lecture, I want this map done. Addition क्या करने का? ऊपर से तो लिख लो. States with its capital. Now come back to that same page, 137. There is something called as union territory. So what is the difference between union territory and capital state? No difference. How many UTs we have? Earlier it was only 7. Abhi JNK and Ladakh has been also made as a UT. Abhi within next 1 year the election will be held in Jammu and Kashmir. Agar election hota hai, if people vote that Jammu and Kashmir should become a state, फिर से हटा. So that was Amit Shah's announcement. Which article was removed from? Which article was removed? Which was given to JNK, special status का. सब कुछ मैं अगर रेडियो चैनल की तरफ बोलते जाऊँ, उधर रिको साइड में article dash डालो Jammu and Kashmir, you find out for me. And I want the date. When was it removed? Shall I tell it right now? Shall I? क्यों घर में Google यूज नहीं करता? करो. And you have to find out me something I told you ITBP. अभी lecture break के बाद. चलो. So first I'm reading Andaman Nicobar. What is the capital? Repeat everyone. Come on, Andaman Nicobar. Loudly. Andaman Nicobar. Chandigarh. Dadra Nagar Haveli. एक लड़का दादर नागर हवेली. It's actually Dadra Nagar Haveli. Okay, what's it? It is Daman and Diu. Daman and Diu is very close from Bombay. You know that? You can take your car and go to Daman. National capital of Delhi. इधर ब्रैकेट में लिख लो NCR. इसी को लोग NCR बोलते हैं. Lakshadweep. Come again. It is Kavarati. Okay. Puducherry. What is the local name of Puducherry? South Indian. Very good. It is Pondicherry, not Puducherry. But in English they call it as Puducherry. JNK. Jammu का capital Jammu में है. Kashmir का capital है Srinagar. Then Ladakh, Leh. तो ये भी आपको मैप में मार्क करना. Is that okay? So you want me to write it like a small बच्चा calendar? याद रहेगा? Will you forget? If you forget, when you sit and do the homework outside the boys' toilet. हमारे ऑफिस उसके सामने तो है. You can close this and try to solve all the question answers which are on page number. Fill in the blanks है page number 140. वो तो आंसर ही दिया है. You have to just write that answer. Then come down to page number 140 में है ना? Answer. Yeah. Very good. I'll check it. Good. Please write up. Come to page number 149. There are question number 1 to 6. Now he asks me any question to find it difficult. To write, everything should be in pencil, no pen allowed. And use the entire 3 lines. एक word answer लिख के लेकर आएगा तो I'm not going to answer.
So Aishwarya will check the girls' homework and Hare Krishna Babuji will check the boys' homework. Yeah, I forgot your name. Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya only. I've got the original videos of Prabhupada. You know? When he was alive, I've shot him live through the video. Okay, shall we get into economics or you want to watch this video? So look, what is our India? It's in Hindi. फिफ्थ पे है ब्राजील, सिक्स्थ पे है ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ पे है हमारा So be ready with your economics notebook. You will start with economics and I will play the video.